Hello everyone. Today we are going to discuss a new poem name is A Legend of the Northland. This poem is written by P.B. Carey. So student, firstly I am telling you the central idea of this poem. So the central idea is the poem is a folk tale passed down from one generation to another, which teaches us not to be selfish. It is meant to be read by small children. It is based in Northland, a very cold place, where once Saint Peter came to the door of a little woman who was baking cakes and asked her for a cake as he was feeling very hungry and weak due to a fast. She was selfish and didn't even give him a single piece of cake. Saint Peter cursed her and told her that she was not fit to live in a human form and enjoy food and warmth. Her turned her into a woodpecker. He turned her into a woodpecker who has to bore a hole in hard and dry wood to get its scant food. The woman was punished for her greed and selfishness. So come to the stanza first and second. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. This poem is a folk tale, and through these stanzas the poet wants to say that away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away means dur in the northland. Northland is a north place of Europe where the hours of the day are few. जहाँ पर जो दिन के जो hours हैं वो कैसे हैं? Few means कुछ. And the nights are so long in winter. और winter में night कैसी हैं? So long. That they cannot sleep them through. कि इस वजह से दे मीन्स वहाँ के जो पीपल हैं वो मुश्किल से ही स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. दे मीन्स पीपल, हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. रेंडियर मीन्स एनिमल्स. वहाँ के जो एनिमल्स हैं दैट इज कॉल्ड रेंडियर. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. जहाँ पर जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनसे वो हार्नेस करवाते हैं, मीन्स वहाँ जो खेती होती है वो करवाते हैं. टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. और जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वो जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? स्लेजेस, जो सामान है वो इधर से उधर लेकर जाते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन. एंड दी चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स. और उनके चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? बियर्स के कब्स की तरह. बिकॉज दे वियर फनी फरी क्लोथ्स. क्योंकि उन्होंने कैसे कपड़े डाले हुए हैं? फनी फरी क्लोथ्स. नाउ सी द स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ. दे टेल देम a curious story. I don't believe
it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. They tell them a curious story. I don't believe it is true. They means people, कि जो वहाँ के लोग हैं, people हैं, they tell them means their children. वो अपने बच्चों को a curious story बताते हैं. Curious means strange. I don't believe it is true. I means the poet. जो पोइट है वो विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप, यू मीन्स आप एक लेसन सीखोगे थ्रू दिस पोइम. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें बताता हूँ. टेल मीन्स स्टोरी को तुम्हें. सो स्टोरी इज वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. एक बार जब गुड सेंट पीटर रहते थे इन द वर्ल्ड बिलो मीन्स वो जीवित थे. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो घूमते थे. प्रीचिंग मीन्स गिविंग सरमन्स मीन्स रिलीजियस थॉट्स. जब वो उपदेश देते हुए, प्रीचिंग करते हुए वर्ल्ड में घूमते थे. जस्ट एज ही डिड, जैसे कि वो करते हैं. यू नो, आप जानते हैं. Let's see the stanza 5th and 6th. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was baking cakes and baking them on the hearth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Through these stanzas, the poet wants to say that he came to the door of a cottage. He means the Saint Peter. The Saint Peter came to the door of a cottage. Cottage means small house. In traveling rounded the earth. घूमते हुए, राउंड लगाते हुए, कहाँ पर? अर्थ पर. Where a little woman was baking cakes. जहाँ पर जो little woman थी, who was baking cakes and baking them on the hearth. Hearth means fireplace. कहाँ बेक कर रही थी वो केक्स को? fireplace पर means अंगीठी पर. And being faint with fasting, and because of the whole day fasting, the Saint Peter faint, and the Saint Peter was feeling hungry, for the day was almost done. क्योंकि पूरा दिन बीत गया था क्या रखते हुए? फास्ट किए हुए. सो ही वॉज फीलिंग हंग्री एंड वीक. ही आस्क्ड हर, हर मीन्स द लिटिल वुमेन हु वॉज बेकिंग केक. ही मीन्स द सेंट पीटर. सेंट पीटर आस्क्ड हर, द लिटिल वुमेन, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि जो उसका केक का जो स्टोर है उसमें से, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसमें से एक केक वो लेडी सेंट पीटर को दे दे. Now come to the stanzas 7 and 8. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one. But it looked when she turned it over as large as the first had done. So word meanings are here. Baking lay means was being baked. Give away means donate free. Needed means molded the dough of. So she made a very little cake. इसलिए जो she means जो little woman है उसने एक छोटा केक मेक किया. बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही उसने उसकी ले ली,
किसकी? उस आटे की ले ली उसने। शी लुक्ड एट इट, जब उसने उसे देखा, एंड थॉट, और उसे सोचा, इट सीम्ड कि यह मुझे ऐसा लगता है, टू लार्ज की बहुत बड़ा है, टू गिव अवे देने के लिए। देयरफॉर इसलिए, शी नीडेड अनदर, उसने दोबारा से आटा लिया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अब उसने एक छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, किंतु वो भी इतना ही बड़ा लगा, उतना जैसे कि पहले वाला जो उसने केक बनाया था। After telling the explanations of each stanzas, now I am telling you some poetic devices which is used in this poem. So first is assonance. Assonance means repetitions of the vowel sounds. For example, ave, ave. Next is simile. Simile means it is a device which compares two different things by using the words as and like as. For example, the children look like bears' cubs. Consonants. Consonants means repetition of the consonant sounds. For example, swift, sledges, snows. So students, I hope you must have understood the central idea of the poem, explanations of each stanzas, word meanings along with the poetic devices. So thank you so much.